Hi, this is Mohammed Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today I will discuss the difference between high impedance relay and low impedance relay. Differential protection, this means differential transformer protection, differential bus bar protection, restricted arc fault protection. ये जो differential protection relay यूज होता है, मैं हमारा पहले वीडियो में बोला था, ये differential protection relay दो टाइप का होता है, एक high impedance, एक low impedance. If you compare between high impedance relay and low impedance relay is more sensitive. इसका ट्रिपिंग टाइप हाई इंपेडेंस रिले से कम होता है, इज मोर सेंसिटिव. सेकेंडली, जिसका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम लोग करूंगा उसका बोथ एंड में जो सिटी रहेगा फॉर हाई इंपेडेंस रिले ऑल सिटीज शुड बी सिमिलर टाइप. इस मीन सिटी का रेशियो, सिटी का कैरेक्टरिस्टिक, सिटी का वीए वार्डन, सिटी का नी पॉइंट वोल्टेज, सिटी का एक्यूरेसी क्लास, all cities are to be same. But in case of low impedance relay, there is no limitation. Different type of different characteristic का relay भी हम यूज करता हूँ in case of low impedance. Next for high impedance relay, फॉल्ट को डिटेक्शन कर लिए जो करंट को कैलकुलेट करता है, एक करंट रिले का बाहर कैलकुलेट होता है, आउटसाइड में कैलकुलेट होता है. बट इन लो इंपेडेंस रिले इट मैनेज इंटरनली. इट्स मीन फॉल्ट करंट का जो भी इनपुट है ये सिटी टू लो इंपेडेंस रिले में डायरेक्ट चला जाता है. बट इन केस ऑफ हाई इंपेडेंस रिले एक कैलकुलेशन बाहर होता है, होने के बाद रिले में इनपुट होता है. तो हाई इंपेडेंस रिले में ये बाहर कैलकुलेट होकर उसका जो रिजल्टेंट करंट का मैग्नीट्यूड है वो इन होता है रिले में. फॉर दिस रिले का सेफ्टी के लिए एडिशनली हमको दो चीज लगाना पड़ता है. फॉर ओवर फॉल्ट करंट प्रोटेक्शन के लिए हमको एक स्टेबिलाइजिंग रजिस्टर लगाना पड़ता है, एंड फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए रिले का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हमको एडिशनली एक मेट्रो सी लगाना पड़ता है. But in case of low impedance relay, there is nothing required. ये करंट का जो इनपुट है डायरेक्टली चला जाता है रिले का अंदर, और रिले इंटरनली मैनेज इट. So if you compare between high impedance relay and low impedance relay, low impedance relay is more sensitive. इसका जो fault sensing time is more less compared to high impedance relay. इसके लिए सिटी का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, जो एक ही टाइप का सिटी होना चाहिए, नी पॉइंट वोल्टेज, रेशियो, एक्यूरेसी क्लास ऑल एक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं है फॉर लो इंपेडेंस रिले. लो इंपेडेंस रिले यूज करने में उसके लिए अलग से हमको स्टेबिलाइजिंग रजिस्टर व मेट्रो सेल का जरूरत नहीं पड़ता है. इतना सारा एडवांटेज रहने के बाद भी हम लोग कोई कोई जगह में पर्टिकुलरली फॉर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और आरईएफ प्रोटेक्शन हम लोग अभी भी हाई इंपेडेंस रिले का यूज करता हूं. क्यों करता हूं? दिस इज ओनली फॉर टू रीजन. वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस. If you compare the cost between low impedance relay and high impedance relay, the cost of high impedance relay is more less compared to low impedance relay. And second one is इसका stability during external fault. External fault होने के बाद भी ये बहुत stable रहता है इस compared to low impedance relay. Stability मतलब इसका सिटी इतना जल्दी saturation नहीं होता है. एक सेम फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड में जितना जल्दी लो इंपेडेंस का रिले का सिटी सैचुरेशन हो जाएगा, उतना जल्दी हाई इंपेडेंस का रिले का सिटी सैचुरेट नहीं होता है. तो कैसे? आई एम कमिंग टू दिस. फर्स्ट आई एम कमिंग टू द सर्किट. एक लो इंपेडेंस रिले का सर्किट कैसे होता है एंड हाई इंपेडेंस का जो सर्किट होता है वो कैसे होता है, सिटी टू रिले का अंदर जो सर्किट होता है वो कैसे होता है. सो लेट्स कम फर्स्ट द लो इंपेडेंस रिले का सर्किट. सो दिस इज द लो इंपेडेंस रिले. So this is the low impedance relay circuit. Low impedance relay का सर्किट आप देखिएगा तो सपोज दिस इज ए ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ. तो इधर एक सेट सिटी, इधर एक सेट सिटी, मतलब तीनों फेज के लिए तीन, इधर तीनों फेज के लिए. तो ट्रांसफार्मर का बोथ एंड में जो सिटी लगा है, सिटी का सेकेंडरी से डायरेक्ट इनपुट को लेके हम लोग रिले में, कंट्रोल रिले पैनल में जो रिले आता है रिले तक लेके आता हूँ. बट इन केस ऑफ हाई इंपिडेंस रिले हम लोग बोथ साइड का जो सिटी है, ट्रांसफार्मर का बोथ साइड में जो सिटी लगा है, सिटी को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करता हूँ सिटी जेबी के अंदर. एचबी साइड का सिटी एंड एलबी साइड का सिटी, बोथ साइड का सिटी का जो आर फेज है उसको हम लोग पैरेलल करता हूँ सिटी जेबी के अंदर. बोथ साइड का सिटी का पैरेलल कनेक्शन करता हूँ, पैरेलल कनेक्शन करता हूँ इनसाइड ऑफ सिटी जेबी इन द फील्ड. आर फेज के साथ एचबी साइड एंड एलबी साइड का आर फेज का पैरेलल कनेक्शन करता हूँ. सिमिलरली वाई फेज, बी फेज एंड न्यूट्रल, तीनों को हम लोग पैरेलल कनेक्शन होता है सिटी जेबी के अंदर. उसके बाद उधर से इनपुट लेके आता हूं हम लोग कंट्रोल रिले पैनल. दिस इज द मेजर
circuit difference of high impedance and low impedance relay. Now you note two things. Suppose the transformer is in the yard, that is HV side, that is LV side, that is HV side, that is LV side. Transformer is in the yard. Transformer to the control room building, हमारा distance है suppose 250 meter. Similarly, here also the distance between transformer to control room building CRP panel 250 meter. तो हमारा जो सिटी का सेकेंडरी से वो निकल के थ्रू कंट्रोल केबल हमारा जो रिले में जा रहा है वो डायरेक्टली जा रहा है एंड दैट इज कवरिंग 250 मीटर. बट इन केस ऑफ हाई इंपिडेंस रिले दोनों साइड का जो सिटी वो पैरेललिंग हो रहा है सिटी जेबी में, दैट इज विद इन 5 to 10 मीटर, विद इन मैक्सिमम 10 मीटर. सो द बैलेंस डिस्टेंस फ्रॉम सिटी जेबी टू कंट्रोल रिले पैनल इन कंट्रोल रूम बिल्डिंग इज अप्रॉक्स 240 मीटर. Let's come. Suppose current is passing in this way. Now I will compare the fault condition for both the relay. जो fault जब होगा तो both the relay में क्या होगा. तो suppose there is a fault in this. तो fault current is circulating in this way. So there is no effect in the differential protection relay and differential protection relay will not sense. Similarly, in case of high impedance relay, if there is any fault in here, fault current is circulating in this way, there is no effect in differential protection relay. Now suppose there is a fault is here. So current is circulating in this way, from fault point current is circulating in this way. So here altitude is more, here altitude is less. So relay will sense and tripping both the breaker, this side breaker and this side breaker will trip both the breaker. Similarly, if there is any fault in this portion, inside this portion, inside these two cities, so fault current will circulate in this way, covering the fault point, and there will be difference in the current. इस साइड का करंट ज्यादा हो जाएगा, इस साइड का करंट लेस होएगा, तो दोनों का जो वेक्टर सम ऑफ द करंट दैट विल बी डिटेक्टेड एंड दैट विल एंटर इन द रिले. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, इसका करंट और इसका करंट सेम होता था, तो उसका जो रिजल्टेंट पर वेक्टर सम करंट जीरो हो जाता था, इसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा था. पर जब फॉल्ट हो जाएगा इसका करंट बढ़ जाएगा, इसका करंट लेस रहेगा, उसी टाइम the resultant current, the vector sum of the resultant current will also pass to relay and relay will trip the system. Till this there is no issue. Same principle में काम करेगा low impedance and high impedance relay. Now if there is any fault occur outside of this portion, if any fault occur, so fault current will circulate in this way. Fault current will circulate in this way. Similarly here also फॉल्ट करंट इज सर्कुलेटिंग इन दिस वे. तो इधर जब फॉल्ट करंट बाहर में सेंस करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा, तो इसी सिटी में भी जो करंट जा रहा है इसी सिटी में भी सेम करंट जाएगा. डिफरेंस रिले हमारा डिटेक्ट कर नहीं पाएगा, लेकिन फॉल्ट करंट दोनों सिटी का थ्रू पास होगा. एंड जो दोनों सिटी का जो बर्डन होगा, दैट बर्डन इज इक्वल टू आई फॉल्ट इंटू आरसी प्लस आर एल. इट्स मीन IF is fault current, RC is the city resistance, city secondary resistance, and RL is the cable resistance. It means fault current into city secondary resistance plus resistance of 250 meter cable, 250 meter cable. So इसका VA बटन होगा this. Similarly जो हाई इंपिडेंस रिले में एक्सटर्नल फॉल्ट होगा, दोनों सिटी से हाई फॉल्ट करंट पास करेगा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट करंट है, वेक्टर सम ऑफ द रिजल्टेंट करंट ऑफ बोथ साइड सिटी विल बी जीरो एंड रिले कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा, इसके दोनों का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉल्ट डिटेक्ट नहीं होगा. बट इफ यू कंपेयर द VA बर्डन ऑफ द सिटी, इट विल बी सिमिलरली IF फॉल्ट करंट इनटू RC प्लस RL. So fault current will be same. This fault current and this fault current will be same. RC will be remain same. RC भी इसका भी जो RC है उसका भी RC सेम है, बट इसका जो RL है that is resistance of 10 meter cable only, because the current will be calculated in this JB itself. It is not go up to relay. So distance is only 10 meter. So RL is only R 10 meter cable.
So our KVL is more less is compared to low impedance relay. So in case of external fault, the burden of the CT connecting with the low impedance relay is very high compared to the cities which are connected with high impedance relay. तो हाई impedance relay का जो burden होगा वो बहुत कम होगा compared to low impedance relay. तो burden जब कम होगा ये CT का saturation होने का भी संभावना बहुत कम रहेगा. The possibility of CT saturation is more less compared to low impedance relay. High impedance relay is more stable. That is why as a backup protection till date we are using high impedance relay with additional low impedance relay in case of differential protection or RF protection.